दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े-बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज इंटरव्यू से इतना डरते क्यों हैं? भाई कुछ लोग तो इसे लिटरली एक क्राइम मानते हैं। सो आज हम इस डर के पीछे की सच्चाई जानेंगे। बट दैट्स नॉट ऑल। फिर हम पर्दे के पीछे देखेंगे एक ऐसे जीनियस के माइंड में, उम्बर्टो इको, जिन्होंने इस डर को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उनका सक्सेस का सीक्रेट क्या था? लेट्स फाइंड आउट। ये इमोरल है, ये क्राइम है। सोचो, ये वर्ड्स हैं लेजेंडरी राइटर रडयार्ड किपलिंग के, सिर्फ एक इंटरव्यू के बारे में। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इतनी नफरत। और यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, वो अकेले नहीं थे जो ऐसा सोचते थे। तो इस एक्सट्रीम रिएक्शन के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, फॉर ऑलमोस्ट 130 ईयर्स जैसे ही इंटरव्यू का चलन शुरू हुआ, बहुत से फेमस लोगों ने इसे एक पर्सनल अटैक माना है। उनको लगता है कि ये उनकी प्राइवेसी पर, उनके काम पर और उनकी असली आइडेंटिटी पर एक हमला है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ इनकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी देखो। नोबेल प्राइज विनर वीएस नाइपॉल कहते थे कि इंटरव्यूज उन्हें जख्मी फील कराते हैं, जैसे उनके अंदर से कोई हिस्सा निकाल लिया गया हो। और लुइस कैरल, भाई एलिस इन वंडरलैंड लिखने वाले, उन्हें तो इंटरव्यूअर से दहशत होती थी, अ प्योर हॉरर। और किपलिंग का व्यू तो हम जानते ही हैं, उनके लिए ये सीधा सीधा एक असॉल्ट था। मतलब ये डर, दर्द और गुस्से वाली फीलिंग्स हैं। बट शायद सबसे पावरफुल, सबसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो इस फीलिंग का दिया गया, वो एक और मशहूर राइटर ने दिया था। एक ऐसी फीलिंग जिसे आप ऑलमोस्ट महसूस कर सकते हो। ये वर्ड्स हैं ऑथर सॉल बेलो के। उन्होंने इंटरव्यू देने की फीलिंग को डिस्क्राइब किया लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। जस्ट इमेजिन दैट फॉर अ सेकेंड। वो फिजिकल प्रेशर, वो घुटन। बेसिकली इन आर्टिस्ट के लिए इंटरव्यू कोई नॉर्मल बातचीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चीज थी जिससे उन्हें फील होता था कि कोई उनका गला दबा रहा है, उनकी आवाज को रोक रहा है। इट्स अ टेरिफाइंग थॉट, राइट? But hold on, this is just one side of the coin. What if someone saw this whole process completely differently? Not as a threat, but as a massive opportunity. All right, let's totally shift gears now. We're leaving behind this world of fear and we're stepping into the mind of a true genius. Let me introduce you to Umberto Eco. He was a famous academic, a professor, and also a novelist who had a completely different take on, well, not just interviews, but on life and work itself. This was Umberto Eco's vibe. He'd say, I am a professor who writes novels on Sundays. How cool is that? I mean, he was a serious university professor writing about super complex topics like semiotics. And then he also just casually wrote novels. The question is, how on earth did one person manage to do it all? We're talking academic papers, essays, children's books, and global bestsellers. Where did he get the time? So his secret? It all comes down to this one powerful idea: interstices. Now, what does that mean? Interstices are basically the empty spaces in our lives, the little gaps of time we all have. Waiting for an elevator, standing in line, those few minutes before a meeting starts. इक्का का राज ये था कि वो इन्हीं खाली वक्त का सही यूज करते थे. He famously said that while waiting for someone to come up in an elevator, he would work on an article. He saw the entire universe as being full of these empty moments, and he simply filled them. And it was this exact philosophy of using every single spare moment that allowed him to create an absolute masterpiece. A novel that was so deep, so complex, that its huge success shocked everyone, including Eco himself. We're talking about his novel, The Name of the Rose. Now, this wasn't some easy beach read. It was a seriously deep book, talking about complex stuff like metaphysics, theology, and medieval history. No one, absolutely no one, expected it to be a commercial hit. And yet, it sold over 10 million copies. That's a staggering number for such a challenging book. So when people asked him, how did this book get so popular, Eco just called it a mystery. He believed that publishers and journalists often think people only want simple, easy entertainment. But he proved them wrong. His theory? The book became a massive success because it came out at just the right time. He felt that 10 years earlier or 10 years later, it might have totally failed. For him, timing was everything. So what do we have here? Two completely opposite points of view. On one side, you have the interview as this painful, suffocating thing, and on the other, you have the interview as a window into a brilliant mind, showing us the secrets to productivity and success. It just goes to show, right? While some people are terrified of the spotlight, it's often in that very spotlight that we learn the most valuable lessons. The interview se डरना नहीं, उसे सीखना चाहिए. So I'm going to leave you with this question to think about.
अगर आपको किसी का भी इंटरव्यू लेने का मौका मिले, लिविंग और फ्रॉम द पास्ट, तो आप किसका लेंगे? और मोर इम्पोर्टेंटली, ऐसी कौन सी एक सीक्रेट चीज़ है जो आप उनसे सीखना चाहेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. Think about it.